Assalamu alaikum dosto. My name is Irfan Ali and today I will teach you about uses of computer. Uses of computer is used in all the places such as banks, markets, institutes, at home, all the places. First of all, I will detail you about कंप्यूटर एट होम. घर पे कंप्यूटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्लेइंग गेम्स, मेकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग एट होम, वर्किंग एट होम एंड सर्चिंग वेबसाइट्स सच एज जॉब साइट्स and other internet searching. I will further describe working at home. Working at home क्या है? जैसे हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं स्कूल की या कॉलेज की घर पे, तो इसको हम कह सकते हैं कि वर्किंग एट होम है. वर्किंग एट होम इज अ वर्क इन विच वी कैन नॉट ट्रेवल टू द स्पेसिफिक प्लेस, टू द सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्क. Banking at home. Banking at home is an activity of practice making transactions at home online. And other my topic, I will describe computer at office. Computers and offices are also used. First of all, computers for applications. Computers for applications. स्टॉक कंट्रोल सिस्टम. स्टॉक कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें किसी स्टॉक को कंट्रोल किया जाता है. इट इज द कंट्रोल सिस्टम इन विच ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स इज रिकॉग्नाइज्ड. फर्दर आई विल डिस्क्राइब इट्स अदर काइंड्स. ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स. ये ऑटोमेटेड जैसे मशीनें हैं, जैसे एटीएम है, उसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है. जैसे कारें हैं, कारों में ऑलमोस्ट जो भी इंडस्ट्रीज है कारों की, वो कंप्यूटराइज रोबोट्स सेव करती हैं. उनका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है कार में इंस्टॉल होता है. फर्दर आई विल डिस्क्राइब दिस and other kind of use of computer. डिज़ाइन सिस्टम्स. कैसे कंप्यूटर डिज़ाइन करता है किसी सिस्टम को. Many products are using programs producing for suppose AutoCAD programs to exact specifications and exact drawings for the products. Before manufacturing any product, they are using this computer technology. Thank you.